Yeah, so we are live. So sugar time pay realize हो गया. Otherwise, it would have been very bad. But never mind. So I was discussing about this concept related to packets and switching and all that stuff, right? So I was just saying, कि let's say I want to send a file from my computer, and the file is let's say for instance RDR2, which is Red Dead Redemption 2, which is worth like 60 GB size. But now I cannot send this file directly to Mahat's PC, which might be up here. Why? Because this file is very big. What if there is some sort of problem over the way? And yahan tak shayad aa jaye, but it get disrupted. And so like you might have spent like 7 hours, but all of them are going to go into vain because the file is not transmitted. So what basically computer scientists did was that they came up with the concept of packet switching. They decided on breaking this big file into smaller chunks. So they were like, why not divide this into multiple smaller files? Maybe for instance, I can say like hundreds of files. And so if I have hundreds of files or maybe thousands of files, each file might be of like 10 MB or 100 MB, right? 100 MB. And so rather than transmitting 60 GBs, transmitting 100 MB was way easier. क्योंकि आपका फाइल छोटा है, जल्दी हो सकता है, and it won't take that much time. But despite that, the problem still exists कि यार अगर आपकी एक ही वायर है तो उसके अंदर there is a possibility. What if there is a disruption? And so you're going to lose the data. And so what computer scientists did was that they introduced the concepts of nodes, which were routers. आपके घरों में जितने routers लगे होते हैं ना, those are basically sort of a device which allows data to be transmitted from one end to the other. So maybe आपके नोड जो कि आपका राउटर है उसके अंदर शायद आपके जो नेबर वाले घर से कोई डेटा सेंड हो रहा हो वो आपके राउटर के थ्रू जाके किसी और के कंप्यूटर में जा रहा हो. So it goes as in the data goes from your computer to one node, then it transmits to other node, then to the other one, then to the other one, and then finally to the computer. And just like that, आपके सारे nodes interconnected होते हैं. So your computer basically makes a decision on which one is the one which will take the least time. And so if you open the book, you're going to see कि आपके पास एक इस तरह की diagram होगी, which basically discusses. Sorry for that. अपनी गले को क्या हो गया? But अब आप book में देखोगे तो you're going to see a diagram related to packet switching. So now what we're going to be doing is कि हम अभी इसी concept को यहाँ पे test किया जा रहा है, and we're going to see कि examiner हमसे क्या demand करते हैं. So the first question says, circle 3 items of the data that can be found in the packet header. So what's a packet header? A packet header is basically that one thing जब आपके data send किया जा रहा होता है ना तो it's divided into multiple parts. सही है? डेटा डिवाइड होता है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर एंड बेस्ड ऑन दैट उन 3 पार्ट्स होते हैं उसमें से जो एक पार्ट होता है दैट इज बेसिकली नोन एज योर हेडर. सही है? तो हेडर, पेलोड, ट्रेलर, ये 3 चीज आपके बुक में देयर इज अ डायग्राम एंड यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स देयर इन द ट्रेलर, व्हाट्स देयर इन द हेडर एंड व्हाट्स देयर इन पेलोड. एंड सो अब यहाँ पे हमने सर्कल करना है 3 आइटम्स दैट कैन बी फाउंड इन द पैकेट्स हेडर. सो द पैकेट हेडर इज सॉर्ट ऑफ, यू कैन अज्यूम इट टू बी द ड्राइवर. Okay, so आपके जब भी कहीं आप जा रहे होते हैं, your driver is the one who knows the exact route, right? उसे पता होता है कि यार किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना, वगैरह कहाँ कहाँ जाना है. So it sort of knows the address of the originator कि किस घर से लोगों को पिक करना है. He knows the address of where you need to go, and then he also is well aware of कि यार गाड़ी में कितने लोग बैठे. सही है? So the same concept applies up here, that your packet header basically knows your originator address. कहाँ से जा रहा है. So like in this RDR2 example, this might be the IP address of my computer, IP address of my PC. Then definitely destination address. आपके header को ही तो पता होता है कि यार I want to send the file to who? Mahat's PC. So IP address of Mahat PC. And then finally आपके जो पैकेट हेडर होता है उसका ये भी काम होता है कि वो इंश्योर करता है कि यार इफ आई एम डिवाइडिंग अ बिग फाइल इनटू लाइक 100 स्मॉलर पार्ट्स, तो 100 स्मॉलर पार्ट्स के एक काउंट भी मेरे पास होना चाहिए कि लाइक आई एम ट्रांसफरिंग दिस फाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 so that I don't mess up. And so your packet header also stores how many packet numbers is the file containing or should be transmitted ideally so that no error occurs. Say, and so that the whole file is working the way it was working on the original PC. And so your packet header basically consists use of these 3 things. See? And now coming to the part 2, it says that each packet is sent along a different path. It's the same thing कि जो मैंने आपको यहाँ पे multiple रास्ते दिखाए थे इस तरीके से from one node to another.
and maybe this is one other, and just like this, and this is one PC, and then this is the other PC. The statement basically means कि यार, what if one file goes like this, then the other file may be like going like this, third file might go like this. So अब ये तीनों अलग अलग रास्तों से जा रहे. See, now the question asks that if the file data is sent through different paths from the employee's device to the employee's device, tick one box to show the name of the method of the sending packets. So अब ये हम क्या कर रहे हैं? We are basically sending data, but ये जो concept है, ये जो जिस तरीके से आपके डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है and then it's sent through multiple routes, this is basically known as packet switching. So yeah, again, this is something जो कि आपको याद होना चाहिए. But again, if you go through the book, and I was recommending everyone to read the book that in the class too, because if you go and read the book, you're going to understand that there is no such concept like packet networking even discussed in the chapter. Just like that, packet circuiting is not something जो कि discuss भी हुआ होगा. Packet transferring, no. जब आप बुक पढ़ोगे ना, आपको फायदा ही होगा कि even if you don't know the answer, it might click you. यार, I have heard something like this in the course, and so you might be like, okay, packet switching, yeah, maybe that's correct. So you go with option C. Then part 3 asks, a hardware device is used to control the path that each packet takes. Give the name of this hardware device. So if you remember, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो nodes बने हुए हैं जिनके थ्रू ये इधर उधर जा रहा है, which is either known as node, और जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया था कि आपके घरों में क्या लगा होता है, router. So the hardware is basically router. So आपके इस part का answer basically is router. Say, then it says part F again comes to the discussion of error checking. But हमने checksum का उस दिन कर लिया था, इसलिए I won't be wasting time again on it. So I'll be continuing. So yes, so the email data is checked for errors after using an echo check. Okay. And a checksum. Explain how the echo check. Okay, so we did not do what echo check is. Echo check करते हैं. So echo check is that concept जिसके अंदर अगर आप लोग physics पढ़ते हैं तो, या फिर physics अगर ना भी पढ़े, अगर आप लोग कभी इस तरह की जगह में जाएं where you might say कि यहाँ पे आप खड़े, say yeah, at the top of one mountain, and then there is this other mountain, and you scream like hello, and so your voice goes there, and then when you say that, within like maybe half second later, you also hear the audio again, say the same thing. You feel like the volume gets reflected back from the mountain. अब ये concept को हम usually in physics we call it echo. The same echo mechanism is being applied up here, where basically what happens is that you send the data from one PC to the other PC. So like data goes from PC A to PC B, and then what PC B does is he resends the data back to PC A. And now the PCA wala banda is saying, okay, let me compare it. So he then compares the data with the original file which was being sent with the file that was being received from computer B. समझ गए? And if it is same, then this means that no error has occurred. But if it's different, this means an error occurred, and फिर उस scenario में आपका data resend हो जाता है. But there is a big problem with echo check, and that problem lies with the fact that what if A से B आपका data perfectly transferred हो जाए, but when the data is again being retransmitted from B to A for the purpose of comparison, यहाँ पे शायद internet का कोई मसला आ जाए and your data gets lost. So now computer A might be wondering कि शायद मेरे end से data खराब गया हो, but in reality it was wrong because आपकी data B जो PC B पे data पहुंच गया था, that was perfectly fine. But when it was returning back, it got distorted, and so it's not working any longer. So either way, it's just a waste of time. So for this reason, your echo check is usually inefficient. So it's not effective enough. Ineffective. So, but now, क्योंकि एग्जाम में इन्होंने बोल दिया कि explain, so now we need to explain the whole concept of how does it work. So just the way I mentioned, हमने क्या करना है, a copy of the data is sent back to the employee's device. So, and then the employee's device basically compares the data to the original data that was being sent. Say, and if the original and the copy do not match, an error has occurred. So 3 mark 3 points. So हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले we're going to talk about a copy of the data is sent back. A copy of the data is sent back to the sender. Send back to the sender. अब sender क्या करेगा? वो इसको compare करेगा. The sender compares the data with the original data being transmitted. Yeah, with the original data being sent. That was being sent.
if the two datas, if they, if the two datas do not match, then this mean, then this indicates, कर देते हैं, then this indicates that an error has occurred. समझ गए कि मतलब आपका डेटा सेंड होगा, वापस यूजर के पास जाएगा, ही इज गोना सी कि यार whether the data which I was sending originally, is it the same as the data which the person sent back to me. If it's same, this means no error. If it's not, this means an error definitely occurred. And so this is how you get 3 on 3. Now one important point which I would like to share in regards of computer science P1 keywords terminology. अब देखो कभी कभार एग्जाम में वो फाइल यूज कर रहा होगा, a copy of the file, a copy of the information. In this scenario, it's a copy of the data. Now, how do I know कि यार मैंने copy of data करना? For this, read the question clearly. You see, the question clearly use the word data. Say, इसी तरह यहाँ भी email data. So whenever it is making use of the keyword data or something, whatever thing it is, like maybe वो आपको बोल रहे हैं an image. So आप आंसर में भी यही कोशिश करो कि आप image को use करो, सही? Rather than maybe making use of some data or information या file, even though you will get perfect marks for that, but try to ensure कि जितना your wording is similar to marking scheme इतना आप करो. And this is not only for CS, this is literally for every subject. Try your best कि आपके जितने data terminologies आप use करें, those are similar to what the examiner expects from you. Because paper number 1 में O level में तो फिर it's not that harsh, but in A levels it's very harsh. And I would recommend कि आप अभी से अपनी practice करने लग जाओ, so it will be very, very beneficial to you. See? So now let's go to the next part where it says that in the checksum error detection method, two values are compared after transmission. If the value do not match, an error is. Explain why the values not matching would show an error has occurred. So अब यहाँ पे आपने फिर से वही बात बतानी है कि how does a checksum work, जो कि हमने उस दिन क्लास में डिस्कस कर ली थी. But to just give a recap, आपने checksum की वैल्यू कैलकुलेट करनी using the data, and then both जो डेटा होगा उसके साथ आपने checksum को ट्रांसफर करना है to the receiver, and the receiver is again going to calculate the data checksum value on the received data using the same algorithm which was used by the sender to calculate the checksum value. सही है? And फिर वो क्योंकि एक ही algorithm से दोनों की values वो हुई है, तो now they are going to be basically comparing the two values and going to see if they are same. Well and good, you have no errors. But if they're not, this means that an error has occurred. And यही आपने बात यहाँ पे सारी बतानी है. See? So now let's continue because this was something already discussed. So already discussed. I'm not sure whether I have even uploaded the video for this. Let me have a look at the YouTube channel. See? So I guess I did upload it if I'm not wrong though. Yes, I did upload it. Yes, it's uploaded. So now let's look up here. G, the email data is encrypted using asymmetric encryption. Okay, so this is not part of chapter 3. Not chapter 3. So we are going to be skipping this. Done with that, now we are completed. Sorry, chapter number 2, not chapter number 3, my bad. So now we are done with this. Now let's go on to the next paper. Before moving on, do you have any sort of questions? Or anything which that's not clear regarding the concept which we are just discussing? This is your winter 24 question paper 13. So October, November 2024, paper 13. All right, seeing none, let's move on. So now we are going to be looking for question number 2, topic number 2 questions in the winter 2024 paper number 11. See, so let's see इसके अंदर हमारे पास कोई questions आते हैं from chapter number 2. Not this, okay, nope. Yep, up here, a pretty good question, again related to the same concept which we were discussing just right beforehand. And this one is basically talking about packets. वही क्वेश्चन जो हम पहले कर रहे थे. अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है. So let's give it a read. So a company decides to create a network for its devices. All the company devices are within the single room. Okay. And now the employees will need to use their device to send data to each other and share files. Makes sense. The company decides to send data across the network using packet switching. Okay. Indicates this is chapter number 2. An employee sends an email to another employee. The email is broken down into packets. Describe the structure of a packet of data
for the email. जो अभी मैंने आप लोग के साथ बात की थी ना कुछ टाइम पहले कि आपके पैकेट जो होता है वो डिवाइड होता है into what, into three things: packet header, payload and trailer. Now this question basically demands कि आप हमें ये बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि ये जितना आपके एक डेटा फाइल वो होता है डिवाइड, वो किन तीन चीजों में होते हैं? नो 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 नो, नॉट सोर्स आईपी एड्रेस, नॉट दोस थिंग्स. नाउ एट दिस पॉइंट इट्स सेइंग कि यार आपके एक फाइल है, दिस इज योर फाइल, and you have to divide this file into three things. Now one of those three things is header, which contains your source IP and all those stuff, say, and other things. Then one of them is your payload, which basically consists of the actual data. And then one of them is your trailer. And you need to basically explain हर में क्या चीज है. Like your trailer contains data such as the error detection system used. Your payload maybe basically contains the actual main data which is being transmitted for the email. And your packet header basically consists data such as the destination address. So हम सबसे पहले इसके अंदर ये बताएंगे कि यार you have three major parts and then we're going to be starting our answer. It's a 4-mark question. Examiner expects us to write 4 points. But because उसने specify नहीं किया कि कितने करने, we are going to go with 5 points ताकि एक हम extra safe hand पे रहे. सही? तो हम सबसे पहले बोलेंगे the data packet has what? Has 3 main similar, not similar, smaller sections. The data packets has 3 sections. अब क्या 3 sections में क्या आता है? The first one is packet header. It has the packet header, which stores data, like the sender's IP address. एक लिखो, सही सुना? टिल दिस पॉइंट आपने एक एग्जांपल दे दी, पैकेट हेडर की बात कर दी, ये कर दी, यू लिटरली जस्ट गेट 3 मार्क्स टिल दिस पॉइंट. जो आपके ट्रेलर होता है, ट्रेलर बेसिकली कंटेन्स द स्पेसिफिक एरर डिटेक्शन मेथड. नहीं, इट्स नोन एज हेडर. सही, इट्स नोन एज हेडर. ये वाली गलतियां ना कर देना कि आप उधर उसको फुटर या कोई उल्टी चीज लिख दो, यू गोना लूज मार्क्स फॉर दैट. सही, इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फसाइज करूं, कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सही. देन आफ्टर दैट यू नो हैव टू टॉक अबाउट द सेकंड थिंग व्हिच इज पेलोड. It has a payload which consists of the actual main data. See? And now we're going to be talking about the thing. It has a trailer that stores data related to, for example, क्योंकि बाकी चीजें भी हो सकती है, but mostly it's error detection. For example, error detection method. And once you write this, you're gonna get a perfect 4 on 4. Now, even if you miss this specific line, आपके remaining points इतने ज्यादा हैं कि आपका 1 point ये हो गया, 1 point ये हो गया, then आपका 1 point ये हो गया, आपके 1-2 points ये हो गए, बल्कि एक ये भी हो गया. So you literally wrote like 6-7 points. सही है? Allah khair kare. But this is how you have to approach a specific question. समझ गए? So now going and moving on. Now let's look into part B. This question is pretty comprehensive though. Now it says that the company decides to use a parallel full duplex data transmission to send the data across the network. Explain the reasons why the company has chosen this method of data transmission. So आपने ये भी बताना है कि why is the company going with parallel. Now आपने ये भी बताना है why is the company going with full duplex. So you have basically 2 parts. And you need to address each of them. इसीलिए 4 marks. So the examiner might expect 2 for each. तो अब आपको पता है पैरेलल एंड फुल डुप्लेक्स, यहाँ पे आपने सिर्फ याद करना है. सही, जो हम यूजुअली मैंने आपको उस दिन भी बताया था के पास 3 सेक्शन क्यों होता है, ये सेट की उसकी मर्जी. यार इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स बेसिकली यू हैव 3 सेक्शंस बिकॉज एक डेटा को इन्होंने जनरली आपके एक ही पर्पस है. सो यू नीड टू सेंड द डेटा. आपका एक ड्राइवर होगा, ड्राइवर भाई ने देखना है कि जाना किधर है. एक आपके एक्चुअल लोग है जो कि डेटा है, एंड देन आपका एक बंदा है जो कि यार पीछे देख रहा है कि यार अगर मैं इस ड्राइवर स्पीड से गाड़ी चला रहे तो अगर पीछे कोई पुलिस आ रही हो तो मैं एटलीस्ट ड्राइवर को इन्फॉर्म कर सकूं. That's the same concept, right? That's the same concept being applied up here. You have the header which is basically telling कि जाना का है. Then you have the payload which is basically consisting of the actual data, and then definitely you have a trailer who is ensuring कि जो भी आपका डेटा है
उसके अंदर यार आई डू नॉट टीच. आई पर्सनली एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. आई एम currently a freshman at LUMS studying computer science. Lungs नहीं lumps सही है. So I'm studying computer science. So yeah, सही है. Thank you, appreciate it. But now let's get back to the questions. सही है. So now it's saying that explain the reasons why the company have chosen this method of data transmission. So the first thing to note here is that when we say that the company decides to use parallel full duplex data transmission, तो हमने सबसे पहले बताने के parallel क्यों? Because definitely, oh no, I don't study a lot, but definitely यार ये क्या स्टडी वाली बात कहाँ से आ गई. बट नेवर माइंड. आप जब पैरेलल यूज करते हैं दिस बेसिकली मींस कि आप मल्टीपल वायर्स यूज करें, व्हिच मींस कि मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट वंस. तो हम ये बोल सकते हैं कि इट यूजेस मल्टीपल वायर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, सो द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द डेटा विल बी फास्ट. एक वायर के थ्रू एक फाइल जा रही है, इसके ऊपर 10 मिनट लग रहे हैं. पर व्हाट इफ एक ही गो में आपके दो फाइल जा रहे हैं, तो ओरिजिनली अगर दो फाइल्स के लिए 20 मिनट्स लग रहे थे, अब दोनों एक ही गो में जा रहे तो 10 मिनट लग रही, तो आपका टाइम बच रहा है. तो हम ये बोलेंगे कि मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा आर sent at once, which allows a faster transmission rate. फर्स्ट पॉइंट आपको 2 मार्क्स यहां तक मिल गए. अब इसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है विद द सेकंड पॉइंट व्हिच इज लाइक डेटा. अब ये पूछे कि रीजंस, एक्सप्लेन द रीजंस. सो द सेकंड रीजन कैन बी कि जब भी हम पैरेलल फुल डुप्लेक्स यूज कर रहे हैं, इट्स यूजुअली अज्यूम कि यार जो आपको पता है देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद मेकिंग यूज ऑफ पैरेलल फुल डुप्लेक्स. इट इज जस्ट बेसिकली आपके जो पैरेलल फुल डुप्लेक्स है उसके अंदर होता ही है कि बाय द वे लॉजिक गेट्स इट्स लाइक द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक आउट देयर. We will do something about it, don't worry. Say so जो आपका parallel full duplex होता है उसके अंदर there is a big problem of data getting skewed, which means कि आपका data is no longer in order. So to prevent that, it's usually implemented कि जब भी हम parallel full duplex use करेंगे, it should be used in a place where the distance between the wires or the distance or the length of the wires, it's very short. सही. तो यूजुअली आपके पैरेलल फुल डुप्लेक्स यूज हो रहे होते हैं इन सर्किट्स. कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स के अंदर मतलब इतने चिप्स के दरमियान जो वायर्स होती है ना, दोज मेक यूज ऑफ पैरेलल फुल डुप्लेक्स. अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यार अब आई हैव दिस प्रॉपर वायर विद मी, so this whole wiring system is basically making use of full duplex. समझ, क्योंकि उसके अंदर डेटा काफी लूज हो सकते हैं. सो क्योंकि इसने रीजनिंग का पूछे तो हम बोल देंगे डेटा may not need to travel a long distance. So data may not need to travel a long distance. And if you note the keyword up here in the question, they said explain. So for explain, it's important कि आप सबसे पहले एक point लिखें and then you connect it with one reasoning. So you are going to get 2 marks when you write 1 point followed by one reason. So it's not like कि आप 1, 2, 3 3 points लिख दें and आप बोले कि I should be getting 3 on 4. It's better कि आप एक point लिखे followed by one explanation to get 2 marks first and then you should continue. सही है? Then you should continue. So now coming to the second point, अब उसके अंदर ये कि यार data may not need to travel a long distance. ये तो हमने लिख दिया. But why? Maybe all the devices are within the single room. As all the devices are within a single room. अब आप सोच होंगे सर ये मेरे जहन में कहाँ से आएगा कि सारे कंप्यूटर सिंगल रूम में हैं या नहीं है. तो ब्रो दिस पॉइंट इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन कि ऑल द कंपनी डिवाइसेस आर विद इन अ सिंगल रूम. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट. देखो वो आपको हमेशा इस तरीके से ना कोई ना कोई आपको पॉइंट वो देता ही है. सही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझ गए. चलो. सो नाउ कंटिन्यूइंग. अब हमने ये 2 पॉइंट्स लिख दिया. अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक और रीजन हम ये भी लिख सकते हैं कि यार इट्स सेंड लाइक अगर आप यहां तक कर दो यू कैन गेट 4 मार्क्स. बट लेट्स से अब आपने एक और भी जाना है, सो यू कैन आल्सो टॉक अबाउट हाउ इट कैन अलाउ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इन बोथ द डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. सो यूजर्स ऑन द नेटवर्क कैन सेंड डेटा टू ईच अदर साइमल्टेनियसली विद नो डिले. सो हम ये भी कर सकते हैं. सही है. नो नीड टू राइट इट बट डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन, सेव्स टाइम एंड अलाउस इसको क्या बोलते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन, यार I forgot the word, but simultaneous. Yeah, simultaneous
simultaneous communication. Okay, so ये भी एक पॉइंट आपके पास 2 मार्क्स, अगर इसके आप अच्छे से कर ले यू कैन गेट 2 मार्क्स फॉर दिस टू. बट एक्सप्लेन, अगर आप चारों सिर्फ स्टेटमेंट्स लगे यू कैन गेट फुल मार्क्स, बट इट्स रिकमेंडेड यू शुड गो विद 1 पॉइंट फॉलोड बाय 1 रीजन. सही. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले आपको बोल रहा था. यार यूजुअली अगर आप ये यूज कर रहे हो ना तो उसके अंदर ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ पैरेलल फुल डुप्लेक्स. नाउ द सेकंड पार्ट आस्क्स द सेम थिंग. गिव टू ड्रॉबैक्स ऑफ द कंपनी यूजिंग दिस मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. So the first one, uh, ISL, यार ना man, I'm not that much free. You guys know, मेरे पास टाइम ही नहीं होता. And आप लोग ये बोल रहे हो. By the way, if you guys want to study, my batch is starting from the 1st of December. Uh, yeah, I know. I have a lot of friends from ISL. ISL is a very good school, and also one of the very best Pakistan teacher, Sarzan. He also teaches at ISL. So yeah, but if anybody of you wants to join my क्या कहते हैं, of course Azan, he came to Lumps that day and it was such a good moment. यार उनके साथ जब मुलाकात हुई थी, very big fan moment. I have to see you. मेरे पास उनकी picture भी है, but को दिखा देता हूँ आप लोग को. But क्या कहते हैं कि if anybody of you wants to opt for my upcoming course, it's going to be inshallah starting from the 1st of December. And inshallah it's going to cover everything. We're going to be discussing the course all the way from the start, and followed by that it's going to go into detail with discussion related to some topical questions and all that stuff. So yaar yahan pe tha to say yep. Kidhar gaya Sazan. Yeah, so you see this is Sazan and this is me. Yep, Sazan. यार जो आप कहते हो मैं आपको खिला दूंगा, don't worry. Say, so now coming back to the question, because we are short on time. So now the drawbacks are firstly, यार क्योंकि आपके multiple wides हैं, so there are more interferences which can basically really result in the data getting skewed. So एक point तो मैं ये लिख दूंगा data may be skewed. And when I say skewed, basically it means कि data is not in order. So data might be skewed. And why is it skewed? क्योंकि long distance है, bits में arrive out of order, कोई जल्दी पहुंच गया, कोई बाद में पहुंच गया, 100 मसले हो सकते हैं. And secondly, आप ये कर सकते हैं कि there is more chances of data collision, more chances of data collision leading to errors. Collision leading to errors. So आप जब इस तरह के वो करते हैं, डेटा मल्टीपल वाइड से जा सकते हैं, काफी मसले होते हैं. So इस वजह से आपके एरर्स के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. डन एवरीवन, आ जाओ आप लोग, सही क्यों नहीं. But never mind, let's continue. Oh, that's great to know. But chalo, let's continue. Give one other method of data transmission the company could have chosen. So अब और कौन सा तरीका यूज किया जा सकता है? So any of the possible methods जो हमने पढ़े हुए हैं उसमें आप कुछ भी लिख लो. So like if it was me, definitely computers के दरमियान है. मैं तो कहूँगा कि यार आप simplex नहीं, serial full duplex यूज करें. Serial full duplex, which basically now it's up to you. अगर आप यहाँ पे serial half duplex यूज करते हैं, simplex parallel simplex यूज करते हैं, parallel full duplex यूज करते हैं, serial full duplex करते हैं, serial simplex, serial half duplex, you're gonna get the mark. बट मैं अब क्योंकि आई फील लाइक दिस इज गुड, आप ये यूज करें क्योंकि इट मीन कि आपके एक वायर होगी बट डेटा कैन बी सेंट इन बोथ द डायरेक्शन. सो डेटा कैन बी सेंट इन दिस डायरेक्शन एंड डेटा कैन बी सेंट इन दिस डायरेक्शन विदाउट द बिट्स गेटिंग skewed. सही तो skew भी नहीं होंगे और आपके फायदा भी हो जाएगा. So we're done with this question too, and we're done with the winter 24 series. So now we're going to look into May June 24 questions. I hope this is clear. Are there any questions? Oh, there's no March summer. Okay, my bad. Are there any questions regarding what we just studied, or should we continue? आप ना इंग्लिश में ही लिखो, ये उर्दू की समझ नहीं आ रही मुझे. No worries. So I hope there are no questions. So let's move on with the summer 2024. This is now the May June 2024 question paper 11. We're going to look for some chapter number 2 questions, and uske baad phir hum, guys, I would appreciate if you guys can focus towards the class. Otherwise, I would have to turn off the chat box, and you guys know I don't love doing that. But let's move on. Same. So now, ab yahan pe dekhte hain. Do we have a question again? Yep.
आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके वही समवट सिमिलर कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। We're going to see, क्योंकि हमने अभी एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन किया है. इट्स द सेम थिंग, यू नीड टू टॉक अबाउट 3 मार्कर है, तो इट एक्सपेक्ट्स यू टू टॉक अबाउट हेडर, देन इट एक्सपेक्ट्स यू टू टॉक अबाउट पेलोड, एंड फाइनली इट एक्सपेक्ट्स यू टू टॉक अबाउट ट्रेलर. समझ गए? सो आपको ये तीनों चीजों के बारे में बताना होगा to get that theory. So we just discussed it, so I'm skipping it. Now the next, again same thing, identify the divisor connects which path is taken by each data packet. So it's the same thing जो हमने पहले discuss की थी. It's none other than your खूबसूरत किस्म का router which is there on your wall or on your table. See, so now part C says serial data transmission is used to transmit the data packets across the network. Explain why serial data transmission is used to transmit the data packets. Now if you note, ये वही वाली बातें आ रही कि I was why not? Routers sometimes are so good. Sometimes are why not? They're literally very good. But now we need to basically look into this question. Where if you note, आपके जितने chapter 2 के ऐसे questions हैं, they're basically talking about the benefits and drawbacks of each wire, each method. So you should be well aware of this. So ये आप याद कर लो. I would recommend listing them down on your notepad कि यार, when should I be going with serial data transmission? Why should I be going with serial data transmission? What are the drawbacks? Once you do make such mind map for all the possible routes and these transmission methods, you will be very much good to go for chapter number 2 questions, inshallah. So अब यहाँ पे हमें क्या करना है? We need to talk about the benefits. So definitely आपका एक तो ये है कि यार इन्होंने आपको ये बोला है कि explain why serial data transmission is used. तो क्योंकि आपको पहली बात ये कि across the network है, across the network का ये मतलब है कि यार maybe my computer is up here, so I might be like in Lahore, and then if I say, let's say Saifullah is in Islamabad, and I have to send the data from my computer to Saifullah's PC. So this might be like maybe how many kilometers? Let's say 400 kilometers. So काफी ज़्यादा distance बन जाता है. So जब आपके पास इतना ज़्यादा distance exist करता है, तो उस scenario में it's recommended to go with serial data transmission ताकि data out of order ना हो. So हम एक तो ये बोल देंगे कि the first reason why I might go with the serial transmission method is that the network may be spread over a longer distance. So हम लिख देंगे the network may be spread over a longer distance. And now just like before, if you see, the question starts with the keyword explain. So आपने एक तो ये point लिख दिया, but अब इसके बाद आपने वो भी बताना है कि reason. So हम ये बोल रहे हैं the network may be spread over a longer distance so serial transmission is used. So this transmission is used so that the data is what? Is arrived in sequence, or the data is less likely to be skewed. Say so that the data is not skewed. इस तरह कर लेते हैं. आपको इसके मार्क्स मिल गए फर्स्टली. फिर आपने ये बता देना कि यार इसके बगैर क्या हो सकते हैं. आप जो हमने पिछले वाले में पैरेलल का वो किए ने, yes I do know Taha. Yeah, I do know him. I guess. Yeah, he's the Georgia Tech one, right? Yeah, he's a friend of mine. Yeah, I know him. तो क्या कहते हैं क्या सो कहाँ पे थे, बात कहाँ चली गई. बट यस, एक्सप्लेन व्हाई सीरियल डेटा ट्रांसफर. ये सो आपके एक पॉइंट ये हो गया कि डेटा स्क्यूड है. बट नाउ व्हेन वी वर डिस्कसिंग जो पैरेलल के ड्रॉबैक्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पे हमारे बेनिफिट्स बन जाते हैं. सही. तो अब उसके अंदर दूसरा पॉइंट ये था कि यार उसमें ज्यादा चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस है. सो हम बोलेंगे सीरियल के अंदर देयर इज लेस चांसेस. सो देयर इज लेस इंटरफेरेंस in serial transmission, and as a result there is less chance of error. Say, and you get full marks. I do know a lot of people from ISL though. Say, yeah, so like a lot of my friends are from ISL. Not a lot of them, but yeah, I do know. काफी जानता हूँ. Yeah, A2K. The batch which just went out. So outgoing batch. But now let's continue. We are done with this question 2. Okay. फिर तो you're way younger. आप शायद जानते भी ना उनको. But now we are done with this and we are having 10 minutes. So let's do one other question before ending the class. Do you have any questions in this, guys? Or are we good to go? Everybody, quickly in the chat box.
Perfect. That's really good. My brother, he's also in O1, and I'm making sure कि वो CS October in the coming May June में दे दे. So I would recommend everyone to do that and go with extra subjects. So yeah, low, try to go. No, that's not bad. To be honest, it depends on your goals. So if you are someone who might be aiming for something big, so it's worth it in my opinion. Okay, फिर वो काफी ज्यादा है. हरम, फॉर दिस आई वुड रिकमेंड आप गूगल के ऊपर सर्च करो कैलेंडर का, एंड उसके अंदर आप ये करो, या यू कैन आल्सो यूज चैट जीपीटी फॉर दैट. सही है, तो उसके अंदर काफी आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा. उसको पता So है। now let's look into this question from summer 24 paper number 12. And do we have a question? Yes, we do. Shukar hai, directly सामने आ गया. Let's go, let's go, let's go. So the first question basically talks about data can be transferred from one device to another. Yep, it can. And now we need to show, take one of the boxes to show which of the term is not a method. Not a method. So ये question आराम से नींद पूरी करके जाना. सही है. हाँ, कि इस तरह की गलती ना हो जाए. तो आप आपने क्या करना है, नॉट. सो सीरियल तो है, नॉट दिस. सिंप्लेक्स, पैरेलल, पैरिटी. सिंप्लेक्स भी है, पैरेलल भी. पैरिटी नहीं है. व्हाई पैरिटी? आपके भाई एरर चेकिंग में आता है. सो दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन जो कि आप गलत करें. दीज आर लाइक दोस बेसिक फ्री मार्क्स. See, Saran says data is broken down into smaller units to be transmitted from one device to another. Give the name of the unit that data is broken down into. So आप जब डेटा को ब्रेक करते हो, तो ये जो आप अभी तक हम परफेक्ट इनाया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो जो अभी तक आपने जितने हमने ये डिस्कशन किए, उसके अंदर हम एक चीज को बार बार रिपीट करते थे, पैकेट्स. पैकेट्स. सो आपकी जो बी पार्ट का आंसर है, दैट इज बेसिकली पैकेट. सो पैकेट इज द आंसर. सी. Now part C says data is often encrypted. Okay, so encryption, if I'm not wrong, is not part of chapter number 2. Encryption is not part of chapter number 2. Let me see. मैं check भी कर लेता हूँ. But if I'm not wrong, नहीं है. But let me confirm it. I have to open the book for that, जो कि अभी मुझे मिल ही नहीं रही. Wow, यार, I'm so good. Just a minute. I had the book somewhere up here then. Hmm, यार, यहाँ पे कहीं रखी तो थी. Never mind, I guess I cannot find it. But if I'm not wrong, yes, आपके book के अकॉर्डिंग भी and आपके syllabus के मुताबिक भी, it's not. Yes, Ibrahim Khalid is a great friend of mine. He's a very good friend of mine. Yeah, so never mind. I guess encryption is not part of this topic, so let's skip this. So it's 9:52 and question jaldi end हो गया. So let's also do the paper 13 का सवाल अगर exist करता हो. But आप देख रहे होंगे कि topical wise आपके काफी question interconnected आते हैं. सही. So काफी आपको ये इस तरह के questions मिलेंगे. But don't worry, inshallah over time, once you cover up the course, you're gonna see कि all of them can be easily solved. Inshallah तो मसले नहीं होगा. Uh, I will get to you in a while. एक सेकंड. आ जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएगा. सर दिस क्वेश्चन. सर ठंड है, प्लीज कैन वी डू. या डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा. अब ये लोड हो रहा है ना, नॉट माय मिस्टेक. सही. ठंड तो है बाय द वे, लेकिन आई एम इन अ टी शर्ट राइडर, और पंखा भी मैंने ओपन किया हुआ है. इफ यू गाइस कैन सी इट इन द बैकग्राउंड, इट्स ऑन. एंड आई डोंट नो. But देखो अभी ठंड बढ़ने वाली है, and you should just lock in. By the way, if you guys are taking these classes, kudos to you, because you are already in those top 1 to 2% of the students who might be taking such classes and taking benefit of it. Inshallah सब अच्छा होगा. यार लाहौर में the thing is, once you are in the room, आपके काफी temperature normal होता है, but the moment you go out, आपको jacket पहननी होती है. तो मेरे वो पीछे jacket है. लाहौर के काफी मसले हैं, and I'm not from Lahore by the way, so because of that smog thing is also something जो कि मुझे काफी affect करेगी. सही है. Nothing beats my Islamabad guys. सही है. I'm not from Islamabad though by the way, but still. So यार जल्दी लोड हो जाओ भाई. I hope it gets loaded quickly. Oh no.
प्लीज नो, ऐसा नहीं करना। ओ ये फिर अब स्पेशली केस हो गया, अब इसका मैं क्या बोलूं, बट नेवर माइंड, दिस इज लोडेड। सो लेट्स सी, डू वी हैव अ चैप्टर 2 क्वेश्चन? अगर हुआ तो हुआ, ना हुआ तो फिर हम देखते हैं। ये आ गया, यस मिल गया। ओ ये तो काफी खतरनाक और अच्छा सवाल मिल गया, जो कि काफी अच्छा हुआ कि आ गया। लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड देन एंड इट अप, सही है। आ, यार गाइस गाइस गाइस, फोकस ऑन द क्लास। फिर आप लोग बोलोगे कि मैं उल्टा पुल्टा बातें कर रहा हूँ, बट क्विकली वी नीड टू एंड दिस क्वेश्चन एंड just focus on the question. This is a very very important question. See, a very important question. No discrimination in the classes. I do not appreciate it, and if seen, I would be taking action against it. See, so this question says a company has a network that includes a web server, and data is transmitted across the network using serial half-duplex data transmission. Now we need to make a diagram to show how the data is transmitted. 4 मार्क्स के आपने डायग्राम बनानी है। क्या बनाना है आपने? सबसे पहले करना है कि यार क्योंकि कंप्यूटर टू वेब सर्वर है, तो एक तो मैं डब्बा बना दूंगा इंडिकेटिंग कंप्यूटर. So this is my PC or computer. Then I'm going to be making a box up here for the web server. Web server. Definitely the data is being transmitted here and there, but you see it's saying half duplex. This means data can be transmitted in one direction and can be transmitted in the other direction, but not at the same time. When you cannot transmit the data in the same time, at the same time, you can usually denote that by having blank spaces among that. So you can have one wire like this, and then the other can be like this. एंड दिस इज टू इंडिकेट कि एक टाइम के ऊपर आपने डेटा सेंड हो रहा है एंड दूसरे एंड पे भी हो रहा है, बट नॉट एट द सेम टाइम. अब यहाँ पे आप इस तरह कर लो 11011101, एंड नीचे आप अच्छे से लिख भी दो कि डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शन. ट्राई टू एक्सप्लेन द डायग्राम ताकि एग्जामिनर को समझ आए. इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम. At the same time. And if you do this, you're going to get a perfect 4 on 4 for this question. See? So now let's continue. Next part is give two benefits of the company using serial half duplex data transmission for this purpose. Benefits again किसके? serial half duplex के. इतने देख लिया, but चलो फिर कर लेते. एक तो एक bits will not be skewed. Say so, bits will not be skewed. Will not be skewed. ये आपका फर्स्ट हो गया. द सेकंड बेनिफिट विच यू यूजुअली गेट इज कि यार आपके चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं. व्हाई? क्योंकि लेस इंटरफेरेंस, एंड आल्सो क्योंकि आपके लेस इंटरफेरेंस चांसेस ऑफ द डेटा बिट्स गेटिंग स्क्यूड है. हम ये भी कह सकते हैं डेटा कैन बी सेंट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड. सो हम यहाँ पे एक कर देते हैं कि लेस चांसेस ऑफ एरर, and you're going to get a perfect 2 on 2. Then we bolte give one drawback of the company using serial half duplex data transmission for this purpose. Yeah, sure. Here you go. All right. So just like a vector quantity, inward sort in Aya, what do you like? What vector quantity? ये जो diagram के ऊपर आप बात कर रहे हो, it's not related to physics though. Say it's not related to physics. But आप ये समझ लो कि ये जो arrow हम indicate कर रहे हैं, it's sort of just indicating कि data एक end से दूसरे end में जा रहा है, and दूसरे end से फिर इस end पे भी जा सकते हैं. So the arrows just indicate the direction. Don't confuse it with concepts related to vectors. Say so this arrow is basically indicating your direction, nothing else. Say so direction तक ही इसको रखो तो अच्छा होगा. So now C part के अंदर हमने drawback discuss करना. Now drawback इसका एक ही है कि यार definitely आपकी एक वायर के ऊपर multiple data files send होंगी, तो there is a greater chance कि आपका data transmission is slow. So the transmission of the data file might be relatively slow. And you get a perfect 1 on 1 for this too. Continuing, अब आपके पास आगे proxy server की बात है. The company uses a proxy server to help blah 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 blah. Proxy server is again not a part of your chapter. Let me confirm it too. Just a minute. I guess मेरे पास. Just a minute. I had the book PDF up here somewhere. I just cannot find it at the point. I have to confirm ये है या नहीं है.
because I remember it's not there, but still we cannot take the risk, right? So just give me a minute, let me confirm it. कि मेरे ख्याल में से तो नहीं है. And okay, encryption is a part of it. Is this chapter 2? Okay, yep. Encryption is yeah. So this is not part of the course. This is not part of the course. लेकिन जो हमने previous paper के अंदर एक question किया था, this is also not part of not the course of this topic. Say this is not part of the नहीं, this is not included. Encryption is my bad. तो हमने इससे पहले कौन सा वाला किया था? Encryption का question जल्दी कर लेते हैं. I guess हम 11 कर रहे थे. So let me see, 11 कर रहे थे नहीं, 11 नहीं 12 के अंदर था. So you're gonna end the class after doing this encryption वाला सवाल and then we can end it. So yeah, part C के अंदर now it is basically talking about encryption. Now encryption बोलते किसे? Encryption is basically a concept that basically what it does is कि आपके data को ना वो random data को उलट पुलट कर देता है. So like अगर मैं ये बोलूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी ये 3 words हैं MAAZ mass 4 and I pass it through some algorithm. कोई कोड मैंने लिख दिया समथिंग एल्गोरिथम जिसको यूजुअली इंक्रिप्शन के लिए बोला जाता है की, पास इट थ्रू सम की, एंड यहाँ पे आपके पास कोई चीज बन गई K78A. अब आप मुझे एक बात बताओ, इफ आई टेल यू व्हाट इज मास, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट यू माइट बी सेइंग सर दैट्स योर नेम. But if I tell you what is K78A, you might not understand that K78A is also my name. तो ये जब आपको इस बात के लिए ये इंक्रिप्शन का पर्पस ये होता है कि आपके डेटा को वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं किसी और वर्डिंग में, ताकि इफ अ हैकर ट्राइज टू एक्सेस योर डेटा उसको समझ ना आए. सो इफ आई हैव अ फाइल जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ भेज रहा हूँ, and let's say I am sending the data from my PC to Inaya's PC, and दरमियान में सैफुल्ला आता है, and what सैफुल्ला does is कि वो यहाँ पे ना उसको हैक कर देता है, and वो मेरे फाइल को दे देते हैं. Now, मैं तो ये नहीं चाहूंगा, बट क्योंकि मैंने इंक्रिप्शन किया, तो अगर यहाँ पे मैंने लेट्स से अपने पासवर्ड को शेयर किया हो, which might be let's say मास, तो इवन इफ सैफुल्ला गेट्स द फाइल, तो सैफुल्ला की स्क्रीन के ऊपर K78A नजर आ रहा होगा, which means कि यार सैफुल्ला कैन नॉट मेक यूज ऑफ द डेटा, उसको कोई फायदा ही नहीं होना क्योंकि इंक्रिप्टेड है. अब उसके लिए या तो उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर जो हमारा पर्पस है वो तो अचीव हो गया कि यार इवन अगर मैं पासवर्ड शेयर कर रहा हूँ, सैफुल्ला ने हैक कर भी लिया तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरा डेटा इज इंक्रिप्टेड. सो नाउ हाउ डेटा इज इंक्रिप्टेड, इसके 2 तरीके होते हैं, एक एसिमेट्रिक होता है, एक सिमेट्रिक होता है. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग सिमेट्रिक, तो हम सिमेट्रिक को ही करेंगे. अब होता ही होता है कि जब भी आप किसी चीज को इंक्रिप्ट करना चाहते हो, यू हैव अ फाइल and you pass it through some key, जो कि मैंने पहले बताई है, and originally the file is known as plain text. See, plain text. When you pass it through a key, it becomes a new file जिसको हम बोलते हैं cipher text. Cipher text. And when you pass the cipher text again through the same key, तो it becomes a plain text. तो ये एक आपके पास encryption की हो जाती है, दूसरी आपकी decryption की होती है. की ऐसे होती है कि यार A should become M, M should become K, Z should become 8. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ MAAZ, तो आपकी इंक्रिप्शन की क्या कर दी थी, M को बना देगा A, M को बना देगा K, एक सेकंड, हाउ डू यू मूव इट, यप, M को बना देगा K, A को बना देगा M एंड Z को बना देगा 8. सो अब इसको मैंने डिक्रिप्ट करना है, तो अगेन आई विल बी लुकिंग, ओके, K is M is A, so same key is again used to convert back into the actual plain text. So अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा. सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि यार how the data, तो हम how the data के अंदर, it's like when you list down alphabet, that's what it is, yep, sort of stuff like that, कि आप उसको आपस में ही ना उनके लेटर्स को चेंज कर लेते, यू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स टू इंश्योर कि अगर कोई हैक करे तो उसके आपके डेटा को कोई समझ ना आ रही हो. सो द फर्स्ट पॉइंट व्हिच यू आर गोना बी मेंशनिंग इज कि यार डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड यूजिंग द सेम की. छोटा कर दो, डेटा is encrypted and decrypted using the same key. इसको लिखने का आपको एक पॉइंट मिल गया. अब आपने बताना है कि यार प्लेन टेक्स्ट इज इनिशियली इंक्रिप्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग एन एल्गोरिथम दैट यूजेस अ की. से सो प्लेन टेक्स्ट, जो कि मैंने ओरिजिनली बताया कि मास, लेट्स से द वर्ड मास, प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट, जो कि KAA8 है, सही है, इज कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट. एंड ये दरमियान में करता क्या है, यूजिंग एन एल्गोरिथम
या through an algorithm that uses a key, इस तरह लिख लो, through an algorithm that uses a key. So अगर मैं यहां तक कर लूँ ना, I will be getting 1, 2, 3, 4. I will get 4 marks. सही, मुझे यहां से मिल गई. लेकिन अगर मैं इसमें एक और पॉइंट भी डालना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यार द की कैन बी जनरेटेड यूजिंग एन एल्गोरिथम. ये एक पॉइंट है, द की कैन बी जनरेटेड थ्रू एन एल्गोरिथम, थ्रू एन एल्गोरिथम. एंड फाइनली आप ये बात भी लिख सकते हैं कि यार ये जो आपकी की होती है, दिस इज बेसिकली ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. तो आपकी की जो एक कंप्यूटर से आपने, लेट्स से इफ आई एम सेंडिंग डेटा टू इनाया, सो द की व्हिच आई यूज टू एनक्रिप्ट इट, इनाया हैज द सेम की टू डिक्रिप्ट द डेटा, अदरवाइज उसको नहीं समझ आ रही. सही है. So now the second part basically talks about give the purpose of encryption. Now the purpose of encryption is only to make the data secure and meaningless. To make the data secure. Now, if the question was of let's say 2 marks, तो आपने यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिखना होता, वो ये होता by making it meaningless. सो ये जहन में रखना, कभी कभार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस तरह दे देगा कि व्हाट इफ वो 1 मार्क का ही मांगे तो 1 पॉइंट वेल एंड गुड, बट व्हाट इफ द क्वेश्चन कम्स जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1 मार्क को, बट वो 2 मार्क का आ जाए, तो आपने एक्सप्लेन करना है हाउ डज इट मेक इट द डेटा सिक्योर. अब वही बात है कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इफ सैफुल्लाह हैक्स इट, he gets the file no matter what happens, but rather than getting the actual file which is Mars, he's getting K78A, which is something meaningless. तो उसको कोई समझ ही नहीं आनी. So in our end, he cannot make use of the password which I was initially transferring, which means कि मेरा data तो secure हो गया, but in reality, वो hack तो कर देता है, लेकिन still उसको कोई समझ नहीं आती. And with that, we are done with today's class. It's 10:06. We went on by 6 minutes, so I'll be ending it up here. Thank you so much for such a good note, Haram. आमीन. थैंक यू. हाँ यार, लम्स में सर्दियों में गर्म पानी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह. Never mind. Thank you so much. Oh, that was great to know, Inaya. That was great to know. Looking forward to seeing you in the class, inshallah. These classes, by the way, if you aren't in the group, do let me know, or you can message me later on. I can add you to the group. And for that, for today, that's it. Let me stop the recording. If you guys have any question, feel free to ask.